Day. This day is celebrated in honor and memory of great scientist C.V. Raman's contribution to science and Indian scientific community. The day marks the discovery of famous Raman effect, a work that earned him the Nobel Prize in Physics in 1930. The basic objective for celebrating this day is to spread the message that science and technology should be applied in daily life. Science City is celebrating this day in collaboration with Punjab State Council for Science and Technology. The theme for National Science Day 2022 is Integrated Approach in Science and Technology for Sustainable Future. Today, we have organized a special talk on the topic Science, Technology and Innovation Impacting Day-to-Day Life. You will learn how science, technology and innovation is impacting to all aspects important to modern society like health, communication, security, climate, etc. We had also organized a Make Best Out of Waste competition for class 9 to 12 class students to celebrate this day. The winners of this contest will also be announced during today's event. I now heartily welcome our chief guest, Professor Ashok K. Ganguly, Deputy Director, Strategy and Planning, IIT Delhi, Dr. Nilima Jared, Director General, Science City, and Dr. Jayesh Grover, Director, Science City, to today's program. Before I request Dr. Nilima Jared to give inaugural remarks, I would like to share her brief profile. Please keep it just one line. Just simple, ma'am. Ma'am is PhD in botany with specialization in ecology and environment science. Prior to joining PGSC, she was Executive Director, Punjab State Council for Science and Technology. She is also the founder, member secretary, Punjab Biostate Board and Punjab State Innovation Council. So over to you, ma'am. Thank you so much, Ritesh. Well, I know we are short of time. First of all, a very good afternoon, Professor Ganguly, and also Dr. Grover and all the other teachers and students. I can see numbers increasing. A very good afternoon to all of you. Every year we celebrate National Science Day. This year it is something special because it is the 75th year of India's independence. And many of you would be aware that a program has been conducted by the Government of India, Office of the Principal Scientific Advisor, DST, through Vigyan Prasar and through the state governments, called Vigyan Sarvatra Pujyate. Some of you would have participated in this program also because this was a 7-day event, जिसमें कि I'll keep the language mixed, जिसमें कि बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, स्कूल स्टूडेंट्स ने, कॉलेज स्टूडेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया है और बड़ा यूनिक प्रोग्राम ये निकल के सामने आया जिसमें स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, टीचर्स, एक्सपर्ट्स, सब लोग और जनरल पब्लिक भी, सब लोगों ने मिलके इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया. The program, if you look at it literally, means science is revered everywhere. The question before us is why is and how is science revered? So if you look at the development, because future is also a part of the sustainable future, is a part of the theme for this year's National Science Day. If you look at it, the development of any country is measured by two things: the economy of that country and the S&T power of that country. The more S&T power you have, the better, more developed you are. And that is what drives the economy of a country. किसी भी देश की economics इस पे depend करती है कि वहाँ विज्ञान का कितना inroads हुए हैं लोगों की आम लाइफ में. और साइंस कम्युनिकेशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि हर किसी में हम ये मोटिवेशन पैदा करें कि वो लॉजिकली सोच सके, अपने आसपास ऑब्जर्व कर सके, अपने आसपास की जो इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए विज्ञान का सहारा ले सके और वैज्ञानिक सोच हो सबकी. हम सब ने न्यूटन के बारे में सुना है.
न्यूटन के जो एप्पल वाली स्टोरी है, ग्रेविटेशनल फोर्स या पुल जिससे आइडेंटिफाई हुआ, वो 1687 में हुई थी। उसके तकरीबन 290, टू बी प्रिसाइज 289 years ago, Steve Jobs came up with another apple in 1976. तो उस एप्पल और इस एप्पल के बीच में बहुत कुछ हुआ है, और जो बहुत कुछ हुआ है उसके साथ साथ आगे भी बहुत कुछ होना है। पर अभी भी मैं कहूंगी कि बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम तो हमने सुना, हमने केल्विन का नाम सुना है, हमने न्यूटन का नाम सुना, हमने आइंस्टीन का नाम सुना, बट if we look around us, there are a lot of other scientists. Even if we look at India, yes, we know about C.V. Raman. We know about a lot of other scientists in India. We know about people who are from IITs. For example, people like Professor Ganguly is there, who is a pioneer of development of nanoscience. He was also the founder director of the Indian Institute of Nanoscience and Technology. So if we look at all this, but then there are a lot of other children who have done a lot of things. For example, have you ever heard the name of Jaspreet Kaur? आप सब, बहुत सारे बच्चे मेरे साथ जलंधर से जुड़े होंगे। जसप्रीत कौर जलंधर के एक स्कूल की लड़की है, who has designed a thermometer which is a color coded thermometer. आमतौर पे थर्मामीटर पढ़ना बच्चों को मुश्किल लगता है, तो इस बच्ची ने कलर कोडेड थर्मामीटर बनाया कि अगर बहुत तेज टेम्परेचर है तो लाल हो जाता है थर्मामीटर, या वो हिस्सा लाल हो जाता है। अगर ठीक टेम्परेचर है, बिल्कुल ठीक है, तो ग्रीन रहता है। और इंडिपेंडेंटली इसके इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एक और लड़का था, जन्मेजा सिंह राठौर, जो बैंगलोर में काम कर रहा था, और बिना जसप्रीत कौर से बातचीत किए उसने भी एक कलर कोडेड थर्मामीटर बनाया, जो कि एक स्टेप और आगे है। अगर लाल हो जाता है और उसमें एक सुपर रेड कैटेगरी है, यानी कि 104 से ऊपर अगर टेम्परेचर हो जाता है किसी का, तो वो थर्मामीटर ऑटोमेटिकली एम्बुलेंस को एक फोन कर देता है। उसमें वो भी प्रोविजन है कि आप बिना किसी के ह्यूमन इंटरवेंशन के हॉस्पिटल में इंफॉर्मेशन चली जाती है कि इस बंदे को हॉस्पिटल पहुंचाने की जरूरत है। तो ये भी आप देखिए कितनी इंपॉर्टेंट साइंस है। इसी तरह से एक लड़की है शालिनी कुमारी, अपनी इंडियन बेटी है, और उसने एक वाटर क्वालिटी टेस्टिंग किट बनाई है जो हैवी मेटल्स को टेस्ट करती है। इसके अलावा एक हमारा लड़का है, आकाश मनोज नाम है उसका। आकाश के ग्रैंडफादर को हार्ट अटैक हो गया था, तो आकाश ने अपने फादर और कुछ डॉक्टर्स के साथ मिलकर यह आइडेंटिफाई किया कि हार्ट अटैक होता है जब, तो क्या क्या होता है, और क्या कोई तरीका है कि पता लग जाए कि ये बंदा प्रोन है हार्ट अटैक को, या इस बंदे को 2 घंटे में या 4 घंटे में हार्ट अटैक आ सकता है। एंड ही कुड डेवलप अ स्किन पैच जो कि आप पल्स पे लगा देते हो, और अगर किसी बंदे को हार्ट अटैक आने वाला हो तो कम से कम 4 घंटे पहले ये पैच बता सकता है कि ये ससेप्टेबल है, इसको पहले ही हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए, ताकि अगर इसकी तबीयत खराब हो तो इसको प्रॉपर टाइम पे दवाई दी जा सके और इसकी लाइफ सेव की जा सके। तो जो इस तरह की साइंस है, सिंपल साइंस है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी के लिए, which we all need to take up and follow. So basically, what is science? Science basically helps us think critically. It helps us, if we look at humans, we are curious creatures. So it helps us look at things, and it helps us channelize our curiosity. And if we can think critically, we are more confident. If we can find solutions, we are more self-assured. We are more fearless. So if I can say that for any generation, if our generation is confident, the nation is confident.
And that is what is required. And that was the whole idea of this program, Vigyan Sarvatra Pujyate. There are a lot of facilities now. We have so many IITs, we have so many IIMs, we have ISERs, we have NIDs, we have institutions of excellence like NABI, CIAB, and the National Institute of Bioenergy, etc., etc. There are so many opportunities where if we want to build careers in science, we can do that. But even if we do not want to build careers in science, even then, science is a part of our life, and it is very important that we learn the basics. We learn to observe, we learn to think logically and critically, and we learn to find solutions of these issues. We need to build a system which accepts failures and which is resilient towards, which can withstand such failures. So I would say to all the students that you are the citizen of tomorrow, you are the scientists of tomorrow. And events like this help us remind and help us tell you that we are looking up at you. कल आप लोग जो कुछ करोगे, आज आप पीजो इलेक्ट्रिक शूज की बात करते हो, हम ड्राइवरलेस कार्स की बात करते हैं, वो इससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज होंगे वो आप लोगों के हाथ में होंगे, आपने उसकी बागडोर संवारनी है। और इसीलिए जरूरी है कि आज हम आज के विज्ञान के बारे में भी सीखें और समझें। आज हमारे साथ प्रोफेसर गांगुली हैं IIT दिल्ली से। ही इज अ वंडरफुल orator, and he will I won't come between you and Professor Ganguly anymore. Thank you so much, and I would hand over the platform to Ritesh once again to kindly introduce Professor Ganguly. Thank you, ma'am. It is my privilege to introduce Professor Ganguly to all of you. Professor Ganguly is currently holding the Professor N.K. Cha Chair in the Department of Chemistry and was earlier Institute Chair Professor from 2019 to 2021. He also joined Professor in Department of Material Science and Engineering and Deputy Director Strategy and Planning at IIT Delhi. He is founding director of Institute of Nanoscience and Technology in Mohali. Professor Ganguly obtained his PhD degree from the Solid State and Structural Chemistry Unit of Indian Institute of Science, Bangalore in 1990. He has published over 320 papers and has filed 5 patents. He is a recipient of National Award of Nanoscience and Nanotechnology given by DST, Government of India. So this was the brief profile of Professor Ganguly. Now I request Professor Ganguly to please take over. Thank you very much. It's a pleasure again to be with all of you at Pushpa Gujarat Science City. Thanks Dr. Nilima, Dr. Grover, Dr. Ritesh and other members of the Pushpa Gujarat Science City for inviting me to deliver a talk on the National Science Day, which we all celebrate in honor of our only science Nobel laureate, Professor Dr. C.V. Raman. And of course, we have Indians who are NRIs, non-resident, who have got Nobel Prize, like Hargobind Khorana and S. Chandrasekhar and Venkat Ramakrishnan. And of course, apart from C.V. Raman and Chandrasekhar, who are related, both Hargobind Khorana and is from Punjab, and Ramakrishnan has visited Punjab, Mohali, and given lectures. Okay, so very happy to be with you, and I would like to talk to you little bit. Science, technology, or innovation has given us many things. Today, the world around you, आप सब लोग देखते हैं जहाँ पे भी, वहाँ पे आप science और technology का imprint देखते हैं. Wherever you are, you can find there is nothing which is untouched by science and technology today. And far corners of our country, the world, everywhere,
you can, see, and you can see the rapid pace in your generation in the last 10-15 years, how technology has changed our lives, how technology has changed the way we do things, and kahan hum aage jayenge in your, I was just thinking that when I was in school like you, say 50 years back in class 5, 6, you know, what was our class like and what we used to do and see outside, how we used to travel, and how today, if you go out in Delhi, the way children travel, and they are with laptop, mobile phone, metro, कुछ भी हमारे टाइम में नहीं था, राइट? आजकल बिना लैपटॉप मोबाइल क्या है, कुछ भी नहीं है, बिना, आपके पास घर नहीं हो सकता है, बट आपको मोबाइल और लैपटॉप चाहिए. दैट हैज बिकम मोस्ट इंपॉर्टेंट. दैट इज द इनोवेशन. क्या टेक्नोलॉजी ने किया है कि आप सब कुछ आपके मोबाइल से कर सकते हैं, राइट? दैट इज द पावर. सो आई विल जस्ट शेयर विद यू some of the things which I am just saying, and let's hope that it amazes you like it amazes me every day. देख कितना कुछ नया हो रहा है. साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन इम्पैक्टिंग डेली लाइफ. हमारी जिंदगी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का और क्या रोल है. हम हर रोज जो करते हैं, राइट फ्रॉम द मिल्क, आप दूध लेने, आपने पता नहीं, आप पंजाब में हैं, कुछ लोगों ने देखा होगा कि गांव में कैसे दूध निकालते हैं. शहर के बच्चों ने देखा ही नहीं होगा, उनको लगता है पैकेट में ही आता है या कैन में आता होगा. They have not seen how milk is extracted, and nowadays everything like abroad, it's all going into companies where they are all packed. So technology, we are celebrating science today because of this man, C.V. Raman. And you hear C.V. Raman is explaining, can you believe in those days, 1928 में उन्होंने ये 28 फरवरी को ये इफेक्ट, जो रामन इफेक्ट कहा जाता है, वो निकाला था. एंड इट इज नॉट एन इजी टेक्निक, मीन्स मेथडोलॉजी इज इजी, पर इसका जो लाइट की रोशनी का इंटेंसिटी इतना कम है कि अनलेस यू हैव वेरी ब्राइट माइंड, आप कभी भी लाइट को नहीं, स्कैटर्ड लाइट को नहीं देखोगे उस तरीके से. कोई सोच भी नहीं पाएगा कि राइट एंगल पे आपको एक डिटेक्टर लगाना है. आप देख सकते हैं ये जो ट्यूब है, ये, I don't know whether you can see my cursor. This is how you put the light into the machine, which is like a small, spectrometer. And you have to put a detector. That means the light which is coming perpendicular to it, उसको observe करना है. ये जो उनके दिमाग में आइडिया था, और बीच में एक फिल्टर लगाना है, ये दो चीज उनको नोबेल प्राइज दिला दिया. बाकी सब कुछ उन्होंने ये लोकली मैन्युफैक्चर्ड, मेड वेरी इजी to show a great effect, जो जर्मनी, यूएस, कहीं पे भी से पहले इंडिया में निकला. एंड उसके इस टेक्निक, जिसको रामन स्पेक्ट्रा कहते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आज भी हम रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करके बहुत पावरफुल सेंसर्स बनाते हैं. वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल सेंसर्स रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा हम बनाते हैं. बट ये टेक्नोलॉजी का जो आइडिया था, दैट्स व्हाई हिज माइंड वाज वेरी शार्प. were two very important things. अगर कभी आप रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे कॉलेज में जाके, तब आप इसके बारे में सोचना कि why Nobel Prize was given for such a simple, device. Because अगर आपका दिमाग तेज नहीं होता तो आप वो रोशनी कभी भी नहीं देख सकते जो उनको पहले ही पता था कि मैं इस एंगल पे इसको लगाऊंगा तभी दिखेगा, और मेरे को कुछ लाइट काटनी पड़ेगी, उसके लिए फिल्टर लगाना पड़ेगा. ये दो very important points were known to Raman, and he had a very bright mind, and he showed that particular wavelength of light which was coming at 90 degrees, which is the Raman scattered light. Very important. But और भी उन्होंने बहुत काम किए थे. But today's talk is not on Raman and Raman spectroscopy, so I will not. यहाँ पे जितने भी तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये उस जमाने के वर्ल्ड के टॉप लोग हैं. कोई जर्मनी से है, कोई स्विट्जरलैंड से है. And he is explaining to them, and how that is how not only Raman was a very bright guy, he knew अगर मेरे को नोबेल प्राइज लेना है
तो ऐसे लोगों को बताना है जिनके समझ में आएगा, जो नोबेल प्राइज देते हैं. तो he called them to Calcutta. So not only he was sharp, he knew what he had to do to show the world that he has a great idea. तो ये भी उनके दिमाग में था. और भी उनकी काफी कहानियां हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो रामन की लाइफ पढ़ने लायक है, जैसे रामानुजम रामन. तो हाउ दे वेंट अबाउट, कैन यू इमेजिन 1928 में वो वर्ल्ड से बात कर रहा है. अभी भी हमारे देश में ऐसे जगह में है जहां पे बच्चे सोचते ही नहीं है कि आप किसी फॉरेन अमेरिकन साइंटिस्ट से बात कर सकते हैं. क्यों नहीं कर सकते आप? आपके पास सब कुछ है आज. जब 1928 में वो बात कर रहा है, जब हमारे पास कई लोगों के पास चप्पल भी नहीं है, तब भी वो अमेरिकन और जर्मन और स्विस से बात करने की कोशिश कर रहा है. दैट शोज ही इज लुकिंग 100 years ahead. मतलब उनको पता है कि मेरे में इतनी नॉलेज है, that Germans will listen to me, Americans will listen to me. That is how you should think. You should not think you are in Fazilka, or you are in Firozpur, or you are in Mohali. You should think that I can talk with the best of the world. In 2022, can't you talk with the best in the world when in 1928 he is talking with the best? 100 साल के बाद. तो आज के बच्चे, आप लोग कहाँ पे आपको जाना चाहिए, आपको ये सोचना चाहिए कि 1928 में without any government assistance, no money from the government of India, private funding, कुछ पैसे से अगर वो इतना कुछ कर सकते हैं अंडर ब्रिटिश डोमिनेशन, जबकि आपके पास यू आर नॉट स्वाधीन, यू आर नॉट स्वतंत्र टू टॉक अबाउट योर थिंग इवन इन कैलकाटा प्रॉपरली. उस जमाने में वो अपनी चीज बाहर विदेशों में ले गए. इमेजिन हिज पावर एंड इमेजिनेशन. तो ह्यूमन बीइंग क्या नहीं कर सकता है. दिस इज विवेकानंद स्टेटमेंट. अगर आप अपने को नहीं बिलीव करते तो दुनिया कैसे आप पे बिलीव करेगी. अगर आपको बड़ा बनना है, पहले आपको सोचना है कि मेरे में बड़े बनने की शक्ति है. आप सब में है वो. दैट इज द पॉइंट. वी आर ऑल गिफ्टेड बाय गॉड ग्रेट पावर्स. इट्स ओनली फ्यू हु पुट दैट पावर इनटू प्रैक्टिस एंड अचीव ग्लोरी फॉर देमसेल्फ, फॉर देयर कंट्री एंड फॉर द वर्ल्ड. अगर रामन ये नहीं सोचते, हमको नोबेल प्राइज मिलता उस जमाने में? कभी नहीं मिलता. हमको और भी 3-4 नोबेल प्राइज मिलने चाहिए थे, but we were not independent. We missed those Nobel prizes. For example, Meghnad Saha, S.N. Bose, their contributions in science, सबको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए. बाद में रॉयल सोसाइटी ने ये कहा, कई लोगों ने कहा इन लोगों को भी मिलना चाहिए था. अगर हम इंडिपेंडेंट होते जरूर उनको नोबेल प्राइज मिलता. So anyway, this is the power of Raman. This is the Nobel Prize that people get. आपको एक मेडल मिलता है and you get some $1 million. And of course, Raman got it alone for physics, and you get it for chemistry, you get for medical science. आजकल आपको पीस के लिए भी मिलता है, पहले और इकोनॉमिक्स के लिए भी मिलता है. पहले सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए मिलता था, और फिर मेडिकल साइंस, and then economics was added, and literature. So our first Nobel Prize was of course to Rabindranath Tagore for literature, right? So Nobel Foundation, आपको सबको नोबेल की भी कहानी पढ़नी चाहिए, क्यों नोबेल प्राइज उन्होंने स्टार्ट किया था. That's also interesting for all of you study. He made lot of money for dynamite, and with that he created this because at the end of his life he thought मैंने only destruction किया है using dynamite, but I have not done anything good. And लोगों ने लिखा था कि ये आदमी मरने के बाद जल्दी मरे, kind of his obituary was written, he is such a bad man. When he realized such an obituary was written, that was the day he decided I will do some good thing. And this was the good thing that he did. He willed all his money for Nobel Prizes. And Nobel Prize का अगर आप citation पढ़ेंगे, उसमें लिखा है that it is for the benefit of society. जो science कर रहा है for the benefit of society. So today the topic is on science, technology and innovation. कि science से society को क्या मिला है, तो क्या नहीं मिला है आप सोचिए. आपका health, food, housing, transport, communication, कहीं पे भी देख लीजिए. इवन आपका टूरिज्म इंडस्ट्री, राइट, आप कहीं घूमने जाते हैं, आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जरूरत है, राइट. सो एवरीथिंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. आज आपके पास अगर कोई दुकानदार है जिसका पास पेटीएम नहीं है, वहां कई बच्चे नहीं जाएंगे. आजकल ज्यादातर बच्चे क्या यूज करते हैं, मोबाइल से गूगल पे करते हैं, पेटीएम करते हैं. सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. लुक एट साइंस. आप कहीं ऐसे दुकान में जाएंगे आज जहाँ पे कार्ड नहीं यूज होता है. दिल्ली में कोई नहीं जाएगा, मुंबई में कोई नहीं जाएगा. आज कैश लेके कौन घूमता है? बहुत कम लोग कैश लेके घूमते हैं.
राइट. सो हेल्थ फर्स्ट थिंग, ये look at antibiotics, Alexander Fleming, X-ray, and on the right is scan of your brain. आप कुछ भी करते हैं, अगर आप साइकिल से गिर जाते हैं तो आइदर आपका एक्सरे होगा, अगर आपको सर पे चोट आई है आपको एमआरआई होगा. ये दो मशीन आप हर हॉस्पिटल में देखेंगे. बट इसका बेसिक्स क्या है? एक्सरे का टॉपिक फिजिक्स में आया था. द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स वाज गिवन फॉर एक्सरे. ये जो एमआरआई मशीन है, ये एमआरआई मशीन डॉक्टर्स ने नहीं इन्वेंट करी थी, ये फिजिसिस्ट ने इन्वेंट करी थी. वो फिजिक्स कर रहा था कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्टडी कर रहा था. न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस ऐसा एक टेक्निक है जो कि जहां पे भी पानी है, पानी में का फॉर्मूला क्या होता है, आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, H2O, राइट. तो हाइड्रोजन जहां जहां रहेगा वो बता देगा, राइट. तो ब्रेन में हमारे बहुत प्रोटॉन्स हैं, उनको वो स्कैन करके बता सकता है कहाँ पे क्या हो रहा है. तो ब्रेन के सिग्नल्स ट्रैक कर सकता है, नर्व सिग्नल्स ट्रैक कर सकता है, उससे बता सकता है आपका ब्रेन सब ठीक कर रहा है, आपका स्पाइनल कॉर्ड ठीक है या नहीं. सो दिस इज द मार्वल ऑफ फिजिक्स विच इन्वेंटेड एनएमआर. आपको पता है जैसे किसी की आर्टरी छोटी हो जाती है, हार्ट अटैक आता है, आप स्टेंट डालते हैं. सबसे पहले जो स्टेंट निकले थे वो मेटालिक स्टेंट थे. वो मेटालिक स्टेंट ऐसे थे कि ये निकल और टाइटेनियम एलॉय से बने थे, वो अंदर जाके बड़े हो जाते थे. हम छोटा सा एक फोल्ड करके वो आर्टरी में डाले जाते थे, वो अंदर जाके खुल जाते थे. इनको शेप मेमोरी एलॉयज बोलते हैं. आजकल हम चेंज हो गए हैं, हम मेटालिक नहीं डालते हैं, हम पॉलीमरिक डालते हैं. बट इमेजिन टेक्नोलॉजी कि आप कोई चीज आर्टरी आपके ब्लड वेसल में डाल रहे हैं, वो अंदर जाके ट्यूब का शेप ले लेती है, राइट. दैट्स पावर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इसमें आपको क्या क्या साइंस लगा? आपको ये निकल टाइटेनियम की केमिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, उसकी एलॉय की कॉम्पोजिशन क्या है, सही कॉम्पोजिशन बनानी है, कैसे बनानी है. इसके लिए हम थर्मोडायनेमिक्स में फेज डायग्राम्स पढ़ते हैं, बीएससी केमिस्ट्री फिजिक्स में पढ़ते हैं. तो सब चीज जो आप क्लास में पढ़ते हैं उसका कहीं ना कहीं साइंस टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होता है. आगे हम इनोवेट क्या किया? पहले हम मेटल के बनाते थे, उसके बाद हमने देखा कि मेटल बॉडी में रह जाता है, अच्छी बात नहीं है, तो हम पॉलीमर बनाने लगे, फिर हम बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर. दैट्स हाउ इनोवेशन वर्क्स. आप पहले एक चीज करते हैं, फिर उसको इंप्रूव करते हैं, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप. सो वी हैव गॉट ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी. आज आपका अगर शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है, यहाँ सर्जरी करनी पड़ती है, आपको पता है सर्जन क्या करता है? सर्जन यहाँ काटता नहीं है, 4 छेद करता है, 4 छेद सुइयां भेजता है, एक से लेजर भेजता है जहां से वो देखता है कंप्यूटर में, बाकी 3 से औजार भेजता है, और वो अंदर वो औजार से स्टेपल कर देता है, आपकी सर्जरी खत्म हो जाती है. इतनी डेंजरस सर्जरी कि ये वाला पार्ट जो है बहुत डिफिकल्ट होता है. बट वर्ल्ड के टॉप डॉक्टर्स इंडिया में भी हैं. अगर आप दिल्ली में जाएं, दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, अपोलो, मैक्स में यू कैन डू ऑल दिस नॉन इन्वेसिव सर्जरीज. आपको सेम डे रिलीज है, 4 छोटे छोटे छेद करके आपका पूरा शोल्डर जॉइंट फिक्स कर दिया. Isn't it a marvel? पहले आपको इतना काटना पड़ता है, इतना करना पड़ता है. So from biodegradable polymers based stents, what all things people have made? Because I am on alloys, और alloys में आप पूरा periodic table आप जानते हैं, आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, कितने मेटल्स हैं, तो हम कितने alloy बना सकते हैं. हर एक चीज का कोई यूज है. इतने सारे हमने alloys बना लिए फ्रॉम टाइम इमेमोरियल. जब आदमी कपड़े भी नहीं पहनता था तब से वो मेटल्स के पीछे भाग रहा है, क्योंकि उसको हंटिंग करना था. फ्रॉम हंटिंग टू टुडे द वर्ल्ड्स टफेस्ट मटेरियल्स एंड स्मार्टेस्ट alloys आर नोन, which are called high entropy alloys. आज के जमाने में अगर आप alloy की बात करेंगे तो टेक्नोलॉजी में हम बात करते हैं हाई एंट्रोपी alloys. कहाँ यूज होता है? एयरक्राफ्ट्स में यूज होता है, सबमरीन्स में यूज होता है, एक्सेट्रा. सो ये जो एयरक्राफ्ट्स हैं, सबमरीन्स, क्योंकि सबमरीन की जो इंजन होती है बहुत पावरफुल होती है, वो इंजन मेल्ट ना कर जाए, क्योंकि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होती है, वो इट्स मेड ऑफ अ स्पेशल अलॉय. या जैसे आप स्पेस शटल बनाते हैं या रॉकेट्स बनाते हैं, उनके जो इंजन्स बनाएंगे, दे हैव टू लास्ट एंड वेरी हाई टेम्परेचर. उसके अलॉयज क्या होंगे? वो आज के जमाने के अलॉयज हैं. ऑफ कोर्स आपको अगर दांत चेंज करना है तो वर्ल्ड के
very high quality alloys भी हैं, titanium based, which are very very expensive. One tooth may cost few lakhs of rupees, right? But they are sophisticated alloys. तो आप देखिए 5000 BC से जब हम जंगल में हंट करते थे, आज भी मेटल्स एंड अलॉयज की इतनी इंपॉर्टेंस है, बट कहां से कहां हम पहुंच गए हैं, राइट? ये हम बात कर रहे हैं सेल्स. एक जमाना था माइक्रोस्कोप में सेल्स देखते थे, अब जमाना आ गया हम एक सेल पकड़ सकते हैं, हाथ से नहीं पर लेजर से. ये 2005 का पेपर है. हम एक एक सेल पकड़ सकते हैं मलेरिया के. आपके बॉडी में तो करोड़ों सेल होंगे जो अगर आपको मलेरिया हो गया, और हम एक सेल पकड़ सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन सा सेल अफेक्टेड है कौन सा नहीं है. इसको कहते हैं ऑप्टिकल ट्यूइजर्स. 2 लेजर यूज करते हैं, 2 लेजर से हम सेल को खींचते हैं, जो ये खींचते हैं और वापस जाता है. ये फिजिक्स में पढ़ाते हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. हम ये कैलकुलेट करते हैं. आप देखिए इसके लिए आपको डॉक्टर भी बनना पड़ेगा, आपको इंजीनियर भी बनना पड़ेगा, आपको लेजर स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट भी बनना पड़ेगा. तो एक आदमी तो नहीं कर सकता है, तो इसके लिए टीम चाहिए आपको. So this kind of work World Health Organization had mandated to a great scientist in MIT and who worked on this problem to find out exactly each malarial cell. आप जो ब्लड टेस्ट करते हैं, डॉक्टर आप एक सेल के बारे में नहीं बता सकता है, वो तो करोड़ों सेल के बाद एवरेज निकालता है, स्टैटिस्टिक्स कि मलेरिया है या नहीं है. बट इससे आप एक एक सेल के बारे में बता सकते हैं. ऐसी टेक्नोलॉजी आज नहीं, 15 साल पहले निकल गई है. ठीक है. हम ड्रग डिलीवरी करते हैं, ये टेक्नोलॉजी भी वेल नोन है कि मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल के साथ ड्रग लगा के वी कैन हैव एन एक्सटर्नल मैग्नेट गाइड द पार्टिकल wherever you want. So suppose I want to take it to this part of the body, I can do that, right? And the drug with the nanoparticle can go, then I can increase the magnetic field and the drug will be released and it will kill the tumor cells, because we know that there is a difference in the temperature at which tumor cells are killed, right? So technology is there. इसको कहते हैं targeted drug delivery. आप नैनो पार्टिकल मैग्नेटिक यूज करके टारगेट कर रहे हैं कहां पे, जहां पे आपको कैंसर सेल किल करना है. नहीं तो होल बॉडी में सेल्स, नॉर्मल सेल्स भी मर जाते हैं. जब नॉर्मल थेरेपी जो होती है, जो कीमोथेरेपी होती है, उससे आपके कैंसर सेल्स के साथ नॉर्मल सेल्स भी मर जाते हैं. बट इसमें टारगेटेड ड्रग डिलीवरी है. सो यू आर ट्राइंग टू अटैक ओनली दैट ऑर्गन वेयर द कैंसर इज देयर. ओके, दिस इज एन एग्जांपल आई वांट टू शो. अ पर्सन who had this disease which is called motor neuron disease, जिससे कि कोई मसल काम नहीं करेगा. स्टीफन हॉकिंग. बट स्टीफन हॉकिंग प्रोफेसर भी बने, पूरी दुनिया ट्रैवल किया, वो डायरेक्टर भी बने, उन्होंने 7 किताबें भी लिखी. हाउ इज इट पॉसिबल? अ पर्सन who cannot walk, cannot talk, cannot move his hand, cannot smile, can do because of technology. He is hardwired. He can work through the computer and through an audio system in the computer he can give lectures. वो लेक्चर भी देते थे. तो ये टेक्नोलॉजी का कमाल है कि that such a person, such a bright mind, who was studying in his masters when he got the disease, and he continued for his PhD in Cambridge University and became a director and toured the world and also became father and grandfather and wrote 7 books. That means टेक्नोलॉजी ने उनको नॉर्मल आदमी की सारी क्वालिटीज दे दी जो उनके पास नहीं थी. मेडिकली he was not having, but technology interfered and made him do जो नॉर्मल लोग भी नहीं करते हैं. कितने लोग 7 किताबें लिखते हैं आप बताइए, उस लेवल की कि जो पूरी वर्ल्ड पढ़ चुकी है. कितने लोगों का नाम नोबेल लॉरेट के लिए गया है, नॉर्मल आदमियों के लिए उनका नाम गया फॉर नोबेल प्राइज, और वो लास्ट दिन तक पेपर लिख रहे थे, राइट? हैविंग ऑल दिस प्रॉब्लम. दैट मीन्स कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है तब सोचा कीजिए स्टीफन हॉकिंग के बारे में कि ऐसे एक आदमी जो चल नहीं सकते हैं, जो लिख नहीं सकते हैं, जो पढ़ नहीं सकते हैं, ऐसे हमको लगता है, बट वो सब कर सकते हैं थ्रू इंटरवेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी. बट द राइट टेक्नोलॉजी हैज टू बी अवेलेबल and he has to be taken to it, right? Look at the development of the vaccine. आप सब vaccines, which is corona vaccine, right? Edward Jenner found the first vaccine, which was the smallpox vaccine, developed from cow. क्या हुआ था? काउ को वैक्सीन, काउ को पॉक्स होता है, वो जो पॉक्स होता है उसको निकाल के एक आदमी में डाल दिया, राइट? एंड देन उसमें जो स्मॉल पॉक्स, जो काउ पॉक्स जिसमें डाला था, उसमें स्मॉल पॉक्स वाला डाला, जिस किसी और को स्मॉल पॉक्स हुआ था.
right? But he was unaffected. That's how Edward Jenner realized कि अगर मैं mild dose of pox का दे दूं तो वो deadly smallpox से बचा रहेगा. This was the first application. But इसमें live virus था, right? And live virus became एक accident हुआ था 1950s में. So people stopped live virus. आजकल हम adenovirus use करते हैं या virus का एक part use करते हैं या dead virus use करते हैं. But उन्होंने एडवर्ड जेनर ने लाइव वायरस यूज किया था. उसके बाद कई वैक्सीन निकली. कोलेरा के लिए लुई पैस्चर ने निकाला. फिर टाइफाइड, अगर आपको डॉग बाइट होता है, राइट, तो डॉग्स में वायरस होता है विच आपके अंदर आ गया तो यू विल हैव पीपल बिकम मैड एटसेट्रा. रैबीज हो जाएगा. सो एंटी रैबीज क्या होता है? दैट इज आल्सो वैक्सीन. वो लगाना पड़ेगा आपको, राइट, इमीडिएटली. बट ऑल दैट दोस वर डेवलप्ड थ्रू लाइव वायरसेस. नाउ वी हैव टेक्नोलॉजी. And I am going to show you a technology which involves nanotechnology. That's important. कि nanotechnology हम इतना बात कर रहे थे और देखो वैक्सीन भी निकाल दिया लोगों ने nanotechnology यूज करके. ये सब 20 साल पहले लोग बात कर रहे थे कि ऐसे वेसिकल्स होते हैं, हमारे बॉडी में भी होते हैं, which are लिपोसोम. लिपोसोम के अंदर हम ड्रग डिलीवरी कर रहे थे लैब्स में, शो कर रहे थे कि अंदर ड्रग जाता है, ड्रग हम कई सेल्स में डाल सकते हैं, ये सब, राइट. 2005 onwards people were working, or 2000 onwards. Now we have these vaccines made in the lab in the last 2 years. Some of them are called viral vectors, some of them are non-viral. Virus को कैरी करने वाला वायरल वेक्टर, राइट. तो वो अगर लाइव है तो जैसे एडिनो वायरस, रेट्रो वायरस, लेंटी, these are all वायरस के थ्रू वैक्सीन दे रहे हैं हम. बट नॉन वायरल वो है लिपिड्स, जैसे लिपोसोम में बात कर रहा हूँ, which are less more safe. They have higher degree of biosafety. Right? So if you see the mRNA based technique which Pfizer and Moderna have, they use the mRNA based technique. And future mein DNA based technique aega. Ye RNA based, when you read more biology, you will note the difference between RNA and DNA. But what I'm trying to say, हम 15 साल से nanotechnology, bio nanotechnology बात कर रहे थे, because that knowledge was there, because that science was there. Within 1 year, they developed the technology. And people initially actually were very not taking this technology. But there is a lady in University of Pennsylvania, an Israeli lady, who developed this technique. And within 1 year, is one of the best techniques in the world, which is using mRNA technique, called the Moderna virus, right? The Moderna vaccine. So science और technology and innovation से 1 साल के अंदर भी आप ऐसी चीज निकाल सकते हैं जो पूरे वर्ल्ड को टच करता है. बिना वैक्सीन आज कौन जिंदा रह सकता है? Right? You need the vaccine. हमारे पास वैक्सीन की शॉर्टेज है, so that because we are not able to yet give it to say 4-year-old, 5-year, we are going down slowly. अभी 15 years तक इंडिया में vaccine is available. But if we get more vaccines, everybody will get vaccinated, right? So look at the development in 1 year. If scientists put their mind, they can get. अभी 100 vaccines market में आने के लिए तैयार है. They are looking for FDA approval. That means इतनी labs world में काम कर रही है. 5-6 वैक्सीन तो अप्रूव्ड है, बट 100 से भी ज्यादा वैक्सीन लाइन पे है. So many scientists are working all over the world, and India is also done tremendously well. अगर इंडिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे नहीं होता, अगर इंडिया की लाइफ साइंसेज आगे नहीं होती, अगर इंडिया के जो नेशनल लेबोरेटरीज है, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पूना में है, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस ये भी पूना में है, या हमारे जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज या CMC वेलोर, ये वर्ल्ड के टॉप लेबोरेटरी से they compete. We have the best minds. तो imagine अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ाते स्कूल कॉलेज में, तो यहाँ जो अच्छे डॉक्टर है, अच्छे साइंटिस्ट कहाँ से पैदा होते? Why we are considered among the top countries in the world? Because we could control all this with our homegrown knowledge. That is why fundamental science has to be taught. Some of you जो सुन रहे हो, you have to be tomorrow's best scientists. You have to be the best doctors of tomorrow. Right? All of you hear of Gagandeep Khan, right? Why? Because she's one of the topmost vaccinologists. उन्होंने retrovirus निकाला था, right? Studied in India, right? Of course, she has got degrees abroad, but she studied in India. She studied at CMC Vellore, right? So you must know आपका बेसिक साइंस अगर ठीक नहीं, अगर आप स्कूल की साइंस ठीक नहीं पढ़ेंगे तो सडनली आप कहाँ से ठीक हो जाएंगे, राइट? वो अलग चीज है कि हो सकता है किसी एक बच्चे को स्कूल नहीं गया है, but he gets an idea in his mind. That's so fine. But to understand the deep mechanism,
अगर आप वायरस क्या स्ट्रक्चर है, अगर आपको ये पता लगाना है तो आपको माइक्रोस्कोपी आना पड़ेगा, आपको बायोलॉजी चाहिए, सेल बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पढ़ना पड़ेगा, imaging पढ़ना पड़ेगा. Then only you will know what is this liposome. So this is what I was showing that people were doing in nanotechnology. And look at what is the structure of the Moderna vaccine. It's very simple, right? Similar, very similar. अंदर RNA है, 2 layer हैं, and this is all taught in chemistry. ये layers क्या हैं? This is a bilayer. This is a bilayer. In chemistry we teach it called surfactant chemistry, colloidal chemistry. कि इसमें एक head group होता है, एक tail होता है. आप हाइड्रोफोबिसिटी पढ़ते हैं स्कूल में, बट आपको सोचता है ये टीचर क्यों पढ़ा रही है, हमारा दिमाग खराब कर रही है. हाइड्रोफिलिसिटी क्या होता है, वो सब इसमें काम आता है. नहीं तो आप ये लाइपोसोम नहीं बना पाएंगे. You need to know the interactions which are going on. You need to know what is hydrogen bonding. Those are our fundamental things. But बिना वो fundamental things पढ़े हुए, to know the exact mechanism how they will happen is not possible. The detailed mechanism कि अगर आप ये कोविड वायरस है, आपने पढ़ा होगा पेपर में बहुत आता है स्पाइक प्रोटीन. These are the spike proteins. अंदर आपके the gene is there for this virus. This is the structure of the COVID-19 virus, which has spike proteins, and inside is the spike gene. And हमको इसको कुछ इसमें से break करना है ताकि ये ineffective हो जाए, right? So we modify, we make molecules look like the spike protein so that it gets attached to the body, the cell parts, and the real virus does not get attached. उसको हम confuse कर देते हैं, right? Structure as similar बनाने के लिए. तो ऐसा हम स्ट्रक्चर बनाते हैं. सो देयर आर लॉट ऑफ मैकेनिज्म. ये बायोलॉजी में आप पढ़ेंगे, बी सेल क्या होते हैं, टी सेल क्या होते हैं, CD4 सेल क्या होता है. तो ये सब अंडरस्टैंड करने के लिए आपको बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी. So you have to understand biochemistry, microbiology, and then you will know how this entire mechanism, कैसे ये molecules अंदर जा रहे हैं, right? Another great thing of coronavirus is telemedicine. And look at technology. Today, actually, मैं हमारे IIT हॉस्पिटल में पिछले जब से कोरोना है कभी गया ही नहीं. क्यों? मैं ऑनलाइन डॉक्टर से बात करता हूँ, ऑनलाइन दवाई आ जाती है मेरे पास, एंड देयर इज अ एक्सटर्नल काउंटर, कोई जाके उठा लेता है. IIT का कोई भी फैकल्टी, कोई भी स्टूडेंट ऑनलाइन ले सकता है. दैट मीन्स आप डॉक्टर से ऑनलाइन बात करते हैं. दिस ऑल टेलीमेडिसिन. आपके रिपोर्ट्स आ जाते हैं ऑनलाइन. आपका जो ओनली थिंग इज, अगर ब्लड टेस्ट करना है, somebody will come at home and take your blood, and all your reports are online. All those reports go to the doctor analyzes it, etc. Right? Many countries, many institutions have done, even in India. All private institutions, I'm sure, have done. All hospitals have this telemedicine facility, right? This technology. You need, what do you need? You need a smartphone. अगर लैपटॉप कंप्यूटर की भी जरूरत नहीं है. You need a smartphone. You download the app of whichever company you are using. अगर Apollo Hospital का है या IIT Hospital का है, you download their app and then you can do whatever you want, etc. Look at the power. आपको डॉक्टर को दिखाने की, डॉक्टर सब देख रहा है, आपको दवाई दे रहा है at home. So imagine somebody on a mountain top. That means all our soldiers, or somebody in a village in Uttarakhand or Himachal, can get facility from the best doctors, say in PGI, in All India Institute of Medical Sciences, and he can give them. आजकल तो robotic surgery भी होती है. The doctor is in London and surgery is being operated in Delhi. This is quite old, not new, right? Many of these things. Now coming to food and water, which is common to all of you. Look at how the world does agriculture. ऐसा एग्रीकल्चर आप इंडिया में कम देखते हैं, बिकॉज हमारे लैंड पार्सल्स छोटे होते हैं, छोटे छोटे लैंड होते हैं. बट इफ यू गो टू US, आई वाज इन अ स्टेट कॉल्ड आयोवा. आयोवा इज कॉल्ड द कॉर्न कंट्री. अगर आप वर्ल्ड US का मैप देखेंगे तो आयोवा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉर्न. कॉर्न मतलब मेज, भुट्टा. तो वहां पे तो ऐसे किलोमीटर मशीन से एग्रीकल्चर होता है. ये हार्वेस्टिंग मशीन से हो रहा है, एवरीथिंग. एंड दे आर ऑल कंट्रोल्ड थ्रू कंप्यूटर्स कि कितने बजे कितना आपको पेस्टिसाइड डालना है, कितना आपको, या तो ड्रोन टेक्नोलॉजी से होता है, या देयर आर पाइपलाइंस गोइंग अंडर वाटर. आजकल बिग सिटीज में भी हो रहा है. अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट में आएंगे तो यू विल सी ऑल पाइपलाइंस. अगर आप ध्यान से देखेंगे, आप वैसे दिखता नहीं है क्योंकि पेड़ों के बीच में छुपा होता है, ग्राउंड में होता है. दे आर ऑल pipelines, mesh of पतले पाइप
which are controlled through computers कि किस time में वहां से पानी निकलेगा. That's all done. If you go to any international airport like Delhi, Mumbai, Hyderabad, they all have their airport के आसपास का जो land area है जो वो beautify करते हैं, they're all done through some computer controlled systems. कोई आदमी जाके पानी नहीं देता है पेड़ों में. They're all controlled by that, right? So you can do all this, and you see these are called silos. These are silos जहाँ पे आप wheat या grain रखते हैं. These are grain storage. They are temperature controlled, and so all this you can sit in an office somewhere else and you can look at the parameters of the grain storage, including the amount which is there, temperature, humidity, all those things. You can look at that. Water purification. So how much water we need, which is going out as wastewater and to be recirculated. How to purify? Purification plants. All the big cities have very good purification plants. And many small countries like Singapore have among the best plants because they are mostly having seawater. They need very good desalination plants and plants to be circulated. So this is a picture of a kind of a water circulation system where wastewater is coming and made into pure water. Okay. So many such things. This is our work. Like you are getting wastewater from cobalt industry. We are converting that cobalt into a catalyst. So the wastewater from a cobalt waste industry से आ रहा है, उसको हम alumina oxide के साथ react कर रहे हैं, करके हम ये nodules बना रहे हैं, and that cobalt aluminate is being used as a catalyst for an organic reaction, and the product of that organic reaction is used for industry application. So this is from a alcohol to a ketone is a very important material used in industry. So this is an example how you can do sustainability with modern science. तो आपकी केमिस्ट्री की नॉलेज आप यूज कर रहे हैं कि कोबाल्ट वेस्ट जा रहा है, उसको आप यूज करके एक कोबाल्ट कंपाउंड बना रहे हैं जो कि एक कैटलिस्ट है जो कि इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट केमिकल जनरेट कर रहा है. ओके, लुक एट हाउसिंग, मॉडर्न architectures. Of course, with all kinds of technology, you can build modern architectures, right? But you can make beautiful structures within no time. Today, 3D printed. You can make 3D printed homes, and you have these chemicals, liquids, which you pour in a mold, and you can make your beams, your structures, and you have smart glasses on that. In no time, you can make panelings, and you can set up these kind of homes wherever you want. This is already in the market, okay? And now 3D printers are available in all institutions to study for research and development, but you can buy large size 3D printers for technology like here shown for building homes. Smart homes, the future. आपका घर है, आपका घर आपके मोबाइल से कंट्रोल हो रहा है. You know, garage door आप खोल सकते हैं, आपके रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर क्या है आप देख कंट्रोल कर सकते हैं. अगर रेफ्रिजरेटर में कुछ बदबू दे रहा है, that something has become rancid, that will give you a signal on your mobile phone. All that you can do. You can turn off the lights. आप प्रोग्राम कर सकते हैं आपके घरों के लाइट कि शाम के इतने बजे होता है. ये तो यूएस में मैंने 40 साल पहले देखा कि घरों के लाइट लोग प्रोग्राम करके रखते थे और जैसे वो 7 बजे होते थे, डिपेंडिंग ऑन विंटर और समर, लाइट्स अपने आप ऑन होते थे और ऑफ होते थे. इसमें कोई ग्रेट वो नहीं है, राइट? सो ऑल दैट यू कैन डू. नाउ coming to transport, I don't know, somebody has done, he hacked the slide, he's marked this red lines, I think somebody, but that's also technology. See, he's hacking on the screen and he's making red lines. So in the transportation, you know about this toy train, you know about bullet trains running at 300 kilometers per hour. And you have got maglevs, magnetic train, they float in air using superconducting tracks, magnetic levitation, and they travel at 450 kilometers per hour. But the world has now technology going at 600 kilometers per hour. That's the technology in 2015 revealed by Japan, but not yet commercialized. World में आज क्या हो रहा है? Electric mobility. This is what is important. Delhi has already started electric charging stations. तो इसमें क्या होता है? आपके मोटर होते हैं रन बाय इन्वर्टर और पीछे बैटरी. आपके ये 3 पार्ट्स चाहिए. तो आपको ई मोबिलिटी के लिए
आपको बड़ी बड़ी बैटरीज बनानी पड़ती है, बट बेसिक केमिस्ट्री क्या है? Basic chemistry are lithium ion, etc. Right? So these lithium ion batteries are huge battery packs. E-vehicles के नीचे होना चाहिए, but look at the smart design somebody has made. Both sides you can sit and you have an electric battery there. And these are all the cars which are coming in the market. If you travel, Tatas and MG Motors, they all have e-vehicles. In Delhi, we see a lot of e-vehicles in the market. And these are the live lithium batteries. So you must understand the chemistry of lithium chemistry, how lithium is going into the material or discharging, charging. So you need basic science to build these batteries. And these are cars in Delhi. And we have a big project in IIT Delhi on electric mobility. And we are using pilot projects in South Delhi, etc., where you can run your cars. And we have got charging stations inside IIT Delhi. But in Delhi, I'll show you in Connaught Place also. You see, this is Connaught Place. This picture was taken 5 years back, but in this place, you see, there was nothing there. Now you can see there's a fast charger there. The same place in Connaught Place, now there's put up by Delhi government, and you can charge your car in Connaught Place. Like that, many places in Delhi, you have fast chargers normally public places में होते हैं, and घरों पे slow chargers, because आप रात को plug point कर दो, जैसे हमारे IIT में हमने लगाए हुए हैं कि आप नॉर्मल प्लग पॉइंट है आप बेसमेंट में एंड आप चार्ज कर सकते हैं, ठीक है. सो नाउ कमिंग टू कम्युनिकेशन, so much change has been there from these old type telephones. Now we have come to mobile phones which we can wear on our hand, mobile phones which close like a page, वो भी मार्केट में अवेलेबल है, right? And all this requires science because mobile technology is through microwave technology and microwave technology is through satellites. But अगर आप कॉलेज में ये सब पढ़ेंगे कि water dielectrics, this is the heart of a mobile phone, but I don't have time. This is the memory disks. आजकल आपके पास पेन डिस्क होते हैं जो टेराबाइट मेमोरी कैरी करते हैं. पहले हमारे पास सीडी होते थे, आजकल मेमोरी डिस्क हैं. So many things. ये पुराने कंप्यूटर्स हैं which have बड़े बड़े चिप्स होते थे, आजकल हमारे चिप्स 5 nanometer chips available हैं. That's why your devices have become small, your gadgets have become small. This is the world's largest chip manufacturing company. This is in Taiwan. This is one man who changed the world, right? He was a professor in MIT, was brought by Taiwan, and he changed his whole country. And Taiwan overtook United States. Today, United States is not the world's largest manufacturing company. Taiwan is the world's largest manufacturing company, right? So many things. Today we can write with atoms, we can write with molecules. We have the world's latest electron microscope. We can see through an atom if we want. We have the technology. In security, all these sensors, ये तो 40 साल पुराने घरों में लगते थे, fire sensors, smoke sensors. But today's sensors, we are more powerful, using terahertz technology from a distance. In an airport, I can see at a time many people. That's why आजकल frisking कई जगह बंद हो गई है. They can see you from the etc. Right? So this kind of technology अभी आ गई है. Delhi airport में भी आ गई है, but they're starting it. This is a technology. I'm going to close with this. This is uses Raman spectroscopy, but it is latest technology. जहाँ Raman का use हो रहा है. It is the most sensitive tool कि आपके हाथ में एक भी molecule है तो वो track कर लेगा. So it is used for detection of explosives, etc. अगर आपके हाथ में जरूर एक कोई भी आपने केमिकल पकड़ा होगा तो 2-4 मॉलिक्यूल रह ही जाएंगे, वो पकड़ा जाता है. So this is because Raman spectroscopy से नैनो टेक्नोलॉजी को हम जब क्लब कर देते हैं, we get a phenomena called surface enhanced Raman spectroscopy. उसके लिए गोल्ड नैनो पार्टिकल, सिल्वर नैनो पार्टिकल्स यूज होते हैं, एंड रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी, दोनों को ज्वाइन करके दिस इज द वर्ल्ड्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑन adulterants and any explosive detection, right? So these are all available, biological agent detection, RDX detection, all this is possible. So I think I have 4:30, I will stop now. There is a lot of energy, etc. Bulbs, all of you know from bulbs, motor, transformer, and smart textiles. Nilima ji, aap dikh rahe hain left side mein. This was in ISER Mohali. I gave a talk, and these jeans have those nanotechnology.
Those socks have nanotechnology. इनको आप बहुत दिन से पहन सकते हैं. इसमें microbes नहीं आएंगे. This is made for the Jawans in Siachen first by ARCI Hyderabad, the DST Institute, and now a company makes it in Bangalore. So many things we have done. Climate change, from waste to energy. Your body fluids can be converted into energy. Your chewing gum, that motion of your mouth can convert into energy. This is called conversion of waste energy into useful energy. We can use technology कि आपके planes freeze नहीं करेंगे, आप volcano के अंदर घुस सकते हैं. All technologies available. आप चांद पे चले गए, आप -156 degree भी झेल सकते हैं. ऐसे कपड़े बना सकते हैं. Technology is there. So future belongs to you. Amazing things ahead. And this I wanted to show you, but I don't think I have time. Okay. So I stop here and thank you very much. It's already 4:32. Thank you, sir. Thank you very much. It was really very informative talk. And I'm sure students will be motivated towards science and technology. Yeah, they got motivated. They hacked into their screen. Yeah. We really apologize for that. No. It was interesting. There's some smart guy there. He should use his. Was off. We are used to hacking. Our IIT students are very smart, so we know how to take care of everything. So some of our students are very bright. They know how to do things, which is good. Very quickly, we can take one or two questions. So, participant, if you have any query, please raise your hand, or you can also send through chat box. Quickly, only 1 or 2 minutes. Who was the one who hacked? If that person can identify, yeah. Really be happy. We should give him an award. We'll give that person free ticket to Science City. Yeah, because that shows that the person is smart. Yeah. But he's using his energy on the wrong side. Anyway. So, Dr. Saab, I was thinking that yes, it's such an interesting talk. मेरे पास privately एक message आया है. हाँ जी. I think that student who has done it probably, but I don't want to divulge the name because उसने मेरे को privately भेजा. Okay, sir. Ninth class student looks like. If it is correct, I don't know. But वो भी पता नहीं सही है या गलत है. Okay. But anyway, we are happy. People are interested and something. Whatever you do, enjoy, and there are great things ahead. And I am sure we need to have a few. Okay, a question I have. Please repeat the point of surgery. वो उसने annotate option को enable कर दिया था, कुछ hack वैक नहीं किया. अच्छा. Annotate किया, annotation. Actually आपको ना वो annotation वाला वो बंद कर देना चाहिए था. वो बंद था सर. Actually में वो Zoom update होता है ना, तो update में वो नया feature आया तो उसमें वो on हो गया. Okay, कोई बात. At least COVID में people have got used to all these things. Yes, sir. Yeah. So that's one student is asking कि आपने वो point of surgery वो repeat करने के लिए कह रहे हैं. तो what I was telling is, if you have a shoulder injury, पहले काटना पड़ता था and all to open this place to put, because यहाँ पे ball and socket joint होता है. यहाँ पे 5 उंगली की तरह the bone is not one bone. 5 उंगली की तरह 5 bone होते हैं held by cartilage. तो अगर एक भी टूट जाएगा तो आप move नहीं कर पाएंगे, बहुत दर्द होगा आपके. तो इसको सही जगह में लगाना था. तो they made 4 holes. 4 होल किए थे, 3 में से औजार भेजे थे. ठीक है. और एक से उन्होंने लेजर गाइडेड इमेजिंग डिवाइस भेजा था जो कंप्यूटर से कनेक्टेड था. सो एक से द डॉक्टर वाज ऑब्जर्विंग, बाकी 3 मैनिपुलेटर्स कहते हैं. मैनिपुलेटर्स से दे वर ट्राइंग टू फिक्स दैट ब्रोकन पार्ट ऑफ द बोन इन द राइट. तो ये टुकड़ा टूट के गिर गया था, उसको सही जगह में रख के दे क्लिप्ड ऑल. तो आजकल क्लिप्स आते हैं, वो क्लिप्स लगा देते हैं, फिर वो हील हो जाते हैं, सेल्फ हीलिंग होते हैं और वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं. तो आपको काटने की जरूरत नहीं पड़ती है सुई धागा को. दैट वाज व्हाट आई वाज टेलिंग यू इन द सर्जरी. Okay. Somebody is saying science has done a lot on the material aspect but has ruined nature.
I agree with you that the amount of damage to the nature done in the last 100 years of industrialization has not happened in billions of years, right? So abhi, that is what the world is now trying to correct कि साइंस में दिस इज कॉल्ड सर्कुलर इकोनॉमी. आजकल आप जो भी साइंस करेंगे, जैसे कोई भी इंडस्ट्री खोलेंगे, आपको देखना चाहिए आप जो भी केमिकल यूज कर रहे हो, रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो, कोई भी आपके नेचर को खराब नहीं करेगा. दिस इज कॉल्ड सर्कुलर इकोनॉमी. आप जो भी मटेरियल बनाएंगे वो बायोडिग्रेडेबल होगा, या वो नेचर में यूज हो जाएगा, या उससे पानी निकलेगा. सो दिस इज कॉल्ड सर्कुलर इकोनॉमी. So all of you who are interested in a sustainable future, look at what is circular economy. You cannot set up an industry जो वेस्ट पैदा करेगा. आजकल गवर्नमेंट लाइसेंस नहीं देगी किसी भी वर्ल्ड में. जितना अच्छा कंट्री होगा, से आवर मोस्ट प्रोएक्टिव कंट्रीज आर लाइक स्वीडन, नेदरलैंड्स, वहां पे एवरीथिंग हैज टू बी टेकन केयर ऑफ. अगर आप 5 चीजों से कोई इंडस्ट्री खोल रहे हैं, हर आइटम शुड गो बैक टू नेचर, शुड बी रिसाइक्लेबल. दिस इज कॉल्ड सर्कुलर इकोनॉमी. सो अब हम सोच रहे हैं कि जो डैमेज हमने पहले किया, जैसे प्लास्टिक वाज अ ग्रेट इन्वेंशन इन 1920s 30s, बट आजकल हम जानते हैं कि प्लास्टिक से कितना हार्म हुआ है वर्ल्ड को. तो हमको बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक यूज करते हैं. इसलिए जब आप प्लेट यूज करते हैं, थ्रो अवे प्लेट्स, आजकल आते हैं प्लेट्स जो कि बायोडिग्रेडेबल है. यूज ऑलवेज बायोडिग्रेडेबल प्लेट्स, यूज बायोडिग्रेडेबल फोर्क्स, स्पून्स. तो अगर आप में वो है, आप जब खरीदेंगे कोई भी चीज फॉर यूज, आपको देखना चाहिए कि आप सिरेमिक चीज, आप कप ऐसा यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएगा. सो दैट्स अ बेटर थिंग टू यूज. जैसे कि आज हम आईआईटी में ग्लास बॉटल्स यूज करते हैं, रिफिलेबल विद वाटर. हम प्लास्टिक बॉटल्स यूज नहीं करते हैं, बैन कर दिया हमने. हम प्लास्टिक बॉटल्स बिल्कुल यूज नहीं करते. सो ऑल ऑफ यू यंग स्टूडेंट्स, यू मस्ट टेक दिस अप कि प्लास्टिक नहीं यूज करेंगे. अगर वो वाला प्लास्टिक यूज करेंगे जो बायोडिग्रेडेबल है. दैट्स हाउ यू शुड वर्क. एंड एनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट यू बाय, you should see whether that industry is running on sustainable processes. मतलब उसके raw materials sustainable होने चाहिए, उनके waste products sustainable होने चाहिए. That is what you should look for. Yes. When can we see a transformation in our education system to promote more practical knowledge? Yes, that I agree. I agree that our students, when they are taught in class, teachers should try to connect to nature or समथिंग दे सी. अगर क्लास में आप केमिकल रिएक्शन पढ़ा रहे हैं, तो कोई बैटरी जो वो यूज कर रहा है उसके बारे में बता के उसके अंदर केमिकल रिएक्शन बताइए. या बल्ब जल रहा है, उसमें टंगस्टन वायर है, टंगस्टन वायर क्या कर रहा है, तो आप टंगस्टन के बारे में बता सकते हैं कि दैट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ ग्लोइंग व्हेन यू पास करंट. या आजकल एलईडी लाइट क्या होता है, उसमें फिजिक्स क्या, गैलियम नाइट्राइड क्या होता है. आई एग्री टू यू, all students, that when teachers teach with an example which they can relate to, that subject becomes interesting. Very good question. I expect that's how teachers should teach. Take an example. If you are teaching biology, खिड़की से बाहर एक प्लांट दिख रहा है, वहां से चालू हो जाइए. आपके पास अगर गेंदा का फूल दिख रहा है, tell them about chrysanthemum and start with that. The student will become interested in that subject. Can the human emotions like greediness, telling lies be controlled through science? ये थोड़ा मुश्किल कार्यक्रम है मेरे लिए बताना, पर शायद हो सकता है, because most of our emotions come through chemicals released in our brain. आप खुश होते हैं because of chemicals, आप दुखी होते हैं because of chemicals. Everything is chemistry. अगर वो molecules बढ़ जाते हैं, जैसे चॉकलेट खाने से अच्छा लगता है लोग कहते हैं, आप शॉपिंग करते हैं तो आपको अच्छा लगता है. These release some hormones in our brain. You know, you must have studied about hormones. And तो अगर इमोशंस जो कंट्रोल, जो ज्यादा झूठ बोलता है, लाई, इसका कोई केमिकल है, तो जो लोग न्यूरो साइकोलॉजी पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, आप अगर न्यूरो साइंस पढ़ेंगे, शायद आप ये कंट्रोल कर पाएंगे. यू मे बिकम अ डॉक्टर और अ स्पेशलिस्ट इन न्यूरो साइंस एटसेट्रा, हु कैन टेल which parts of our brain get activated in a person who is telling lies. Right? Anything else? I tried to answer in the chat box whatever I was saying. Excuse me, I always notice in Albert Einstein, there is always E is equal to mc square. Okay. M is mass
and c is velocity of light. That is your question. Okay, that is Einstein's equation, E is equal to mc square. Okay, can we say jugaad term that came out from Punjab is a type of innovation? Yeah, it is low science, उसमें साइंटिफिकली बहुत ज्यादा नहीं है, बट इट इज फॉर लोकल सामान से उसने जुगाड़ करके कुछ बनाया है जो यूजफुल है. सो इट्स गुड. एनीथिंग यूजफुल विद लोकल आइटम्स विच इज चीप इज जुगाड़. अगर आप गोल्डन टेम्पल में जाओगे, मैं बहुत आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय दैट, द वे दे गिव वाटर, यू नो, दे हैव अ काइंड ऑफ अ साइकिल वाला पंप. आप जमीन पे बैठे होते हैं, आपको पानी देते हैं ना हला के, आपने देखा होगा हाथ से नहीं डाल रहे हैं, उनके साइकिल के पीछे एक ड्रम रखा हुआ है, दे आर डूइंग समथिंग विद द पंप, और पानी नीचे नलका लगा हुआ है, पानी ग्लास में आ रहा है. दैट्स अ जुगाड़ टेक्नोलॉजी, राइट? इफ यू गो टू गोल्डन टेम्पल and sit in the langar, you will get it. So I related something which all of you will relate to. That's golden temple. So that's how in teaching, if you can relate to things which a student can relate to, it becomes interesting for the student. Thank you. Bye-bye. I think that's okay. Yes, sir. It's 4:42. Sir Ritesh. Thank you, sir. Thank you for sparing a time on such a busy day. So हम सर आपको द्वारा किसी और इवेंट में ज्वाइन कराएंगे सर, किसी दिन जब टाइम हमारे पास पूरा होगा. तो थैंक यू सर. तो अभी हमारा वी विल अनाउंस द रिजल्ट फॉर द कंपटीशन. तो हमने एक बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कंपटीशन वी हैव ऑर्गेनाइज्ड. I will take leave, Dr. Nilima, Dr. Yes, Grover, and Ritesh ji. Bye. Thank you very much, sir. We are indeed very, very thankful to you. And yes, we are meeting again online. I hope the students Very soon. enjoy. I'm sure they did. So we can continue with our program, Ritesh ji. So we are now going to announce the result. So around 38 entries were received for this contest, and we have evaluated these entries through the experts. So I request now Vishal to announce the results, and after the results we will also showcase the videos that were shared by the students of the shortlisted models. Vishal, your mic is mute. Thank you, sir. Thanks a lot. I first of all extend my warm welcome to you all. Namaskar, Sat Shri Akal. Today, the wait for the result is going to end. I look upon it as a great opportunity to announce the results. A competition Make Best Out of the Waste was held, for which students from class 9 to 12 took participation. They proved that nothing is wasted. The waste can be changed into useful things. Now, without wasting time, I announce the, first of all, third prize. It is a cash prize of 1,000. And it goes to Yashkaran Ratu of class 11th Meritorious School, Jalandhar. The title of the project, so give him a big hand. So the title of the project is Doll and Photo Frames from Old Newspaper. So that's a great effort by the Meritorious School student. Now I will announce the second cash prize, and it is of rupees 2,000, and it goes to Paramjit Kumar of class 10th, Government High School, Dhaliwal Dhona, Kapurthala. The title of the project is Bioenzymes as a Cleaning Agent. He used peel of fruits to make cleaning agent. So really a big hands to him. Now, talking about the first cash prize, it is of 3,000, and the winner is Kritika Sharda from class 9th of Swami Sant Das School. She made a manual mobile charger from waste material. So give her a big applause. Thank you very much. Now I will show you the videos of the participants that who got first, second, and third position. So starting from third position, yes.
पहले आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार। मेरा नाम यशकरण रत्तू है और मैं मेरिटोरियस स्कूल जलंधर का 11वीं कक्षा का छात्र हूँ। तो आज जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 28 फरवरी हर साल की तरह नेशनल साइंस डे के रूप में मनाई जाती है और पुष्पा गुजराल साइंस सिटी हर साल अपने नए नए कंटेस्ट नेशनल साइंस डे पर रखता है। तो इस साल भी नेशनल साइंस डे पर पुष्पा गुजराल साइंस सिटी ने कंटेस्ट रखा जो कि था बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। तो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट में जब भी मैं बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट की बात करता हूँ सबसे पहले मेरी नज़र मेरे घर में पड़ी हुई जो न्यूज़पेपर है उस पर जाती है। तो मैंने जब भी क्राफ्ट बनाया उसमें मैंने मतलब प्लास्टिक का इस्तेमाल तो हो जाता था, लेकिन मैंने इस साल जो मैंने अब क्राफ्ट बनाया मैंने चाहा कि मैं 0% प्लास्टिक को यूज़ करूँ, यानी कि मैं उसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल करूँ ही ना। तो ऐसे में मैंने जो न्यूज़पेपर से ही सब कुछ बनाने की कोशिश की। तो न्यूज़पेपर में बनाने के लिए मैंने सबसे पहले आइडिया मुझे तब आया जब मैं देख रहा था कि मेरी जो छोटी सिस्टर है वो खेल रही थी और मेरा आइडिया तब भी बढ़ गया कि हाँ मैं न्यूज़पेपर से इसे बनाऊँ। तो मैं आपको आई थिंक आप गैस कर ही चुके होंगे, तो लेट्स सी कि मैंने क्या बनाया। मैंने बनाया दिस डॉल जो कि मैं अपनी सिस्टर के लिए बनाई। बेस्ट आउट ऑफ क्राफ्ट में मैंने जो है ये डॉल बनाई। तो इस डॉल को बनाने में मैंने 0% प्लास्टिक का इस्तेमाल किया, 0%। सो इसमें मैंने जितना भी कुछ बना हुआ है सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर से बना हुआ है। इसी के साथ मैंने ऐसे ही न्यूज़पेपर के साथ मुझे पुष्पा गुजराल साइंस सिटी से जैसे कि सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, तो मैंने उन सर्टिफिकेट्स को जैसे मतलब सर्टिफिकेट्स को जो मैंने वो किया है फ्रेम किया है, यू कैन सी, देखिए। तो मैंने सर्टिफिकेट्स को ऐसे ही फ्रेम किया है। तो लेट्स सी कि मैंने जो है ये डॉल वो कैसे बनाई है, तो मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले मैंने जैसे आपको दिख रहा है कि नीचे की मैंने एक पहले रोल किए। रोल करने के बाद मैंने उन करीब मिनिमम 50 रोल्स जो है वह मैंने बना लिए हैं। आफ्टर 50 रोल्स मैंने जो है इसकी स्कर्ट बनानी स्टार्ट की है, जिसके लिए सबसे पहले मुझे एक कार्डबोर्ड की ज़रूरत पड़ी। तो छोटा सा मैंने कार्डबोर्ड कटिंग की, उसके साथ साथ मैंने जो स्कर्ट है उसको प्रिपेयर किया जैसे कि आप नीचे देख रहे हो। आफ्टर दैट मेरा जो नेक्स्ट मकसद था, आप जैसे देख रहे हो कि मैंने उसे टी शेप में बनाया है और उसके बाद मैंने उस जो डॉल का माउथ है, फेस है, उसे बनाना स्टार्ट किया। आफ्टर फेस मैंने कैप जो है वो बनाई। अब कैप के बाद मैंने बाजुएं बनाई, शोल्डर्स बनाए और ऐसे मैंने अपनी जो है ये क्यूट डॉल बना दी और इससे मेरी जो छोटी सिस्टर है बहुत ही खुश है। मैं साइंस सिटी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये कंपटीशन रखा था, क्योंकि मेरा जो मकसद था प्लास्टिक को ना ही करना था। इसमें मैंने कोई भी प्लास्टिक का यूज़ नहीं किया। और अगर मैं बात करूं अपने ये फ्रेम्स की, तो इन फ्रेम्स में भी प्लास्टिक का यूज़ नहीं किया गया। ये फ्रेम ओनली ऑन न्यूज़पेपर से बनाए गए हैं। ये देख सकते हैं कि ये जो स्टिक्स हैं ये मैंने वही स्टिक्स यूज़ की हैं जो मैंने बनाने के लिए की थी। सेम नेक्स्ट जो सर्टिफिकेट मैंने बनाया उसके लिए भी मैंने विदाउट कोई प्लास्टिक यूज़ नहीं किया। आप देख सकते हैं ओनली ऑन स्टिक्स। तो ये था मेरा कंपटीशन। तो thank you so much for watching my video and have a nice day, and thank you so much for organize this competition for ours. Now, I'm going to share a video of second prize, that is Paramjit Kumar. Speak. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਮਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਲੀਵਾਲ ਦੋਨਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਇਓ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵੇਸਟੇਜ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ, ਫਰੂਟਸ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ। ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਗੁੜ ਪਾਇਆ। ਗੁੜ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਗੈਸ ਕੱਢਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਇਓ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ It's really great effort put up by the students. Now I'm going to share the Kritika Sharda who got first prize. A very warm and pleasant good morning to everyone. There is a very famous quote given by Robert A. Heinlein that everything is theoretically impossible until it is practically done. So today, with this idea, I, Kritika Sharda, is delighted to be a part of this online science exhibition based on the topic of making daily utility items from using scientific applications. So as we all know that in today's modern era, mobile phones have become a basic necessity of our lives. These mobiles have made it very easy for us to communicate and do other various activities, just like our entertainment, socializing with people, and many more things. Life becomes very fast by the use of these mobiles. But where there are many benefits of using these mobiles, there are a few drawbacks also. And the main drawback is of charging. Whenever electricity is not present, charging becomes a hurdle. We all go through this hurdle once or many times a month, a day, or a week. So today I have come up with an idea of how to charge our mobiles without using electricity. So as we all study many concepts in our science classes, today I have taken a very easy concept from our physics subject. And that is the concept of an AC generator. An AC generator is a device which works on the principle of converting mechanical energy into electrical energy. So now, as we have discussed a lot about the mechanism of our mobile charger, I would like to bring your kind attention towards this model. So this is the mobile charger which I have prepared. This all is prepared from using waste material only. This was a waste electricity board present in my home, and here I have taken 2 wooden discs to make this grooved wheel. This was also taken from an old wooden plank. These screws are taken from an old fan, and here this motor, this has been taken from an old model, and this is the charging wire of an old charger. So basically in this charging wire, there are 4 wires present in it. So as you can see at the top, the diagram of the wires is blinking. There is one red wire, a black wire, a white and a green one. So basically in this concept, we have only used the red and the black wire as it is used for generating the electricity. And here is an elastic belt. At the place of an elastic belt, an elastic rubber band can be used. So I am joining this elastic, using this elastic belt, I am joining the groove wheel with the motor. So now it's the time to check the working of this charger. I'm very excited and hope that you people also will be. So here, to demonstrate the checking, I have taken a mobile and here I am connecting it with the lead. And so to let this in place. So now we will be circulating this pulley in a clockwise manner to produce charges. So as you people can see, now we have seen the working of my mobile charger. I hope that you all liked it and will also try to opt such easy working methods in our daily life. So there are a few points which we have to remember while using this charger, that we always have to rotate this pulley in a circular clockwise motion, and when we have used this and this is not in use, we always have to remove its belt and we can just rotate it around the pulley only so that the belt does not overstretch and gets break. Hope you all liked my model and thank you for being a patient viewer. That's all. Students, the feedback link is shared in the chat box. So do fill the feedback link so that we can bring best next time. So now I hand over the session to Patrick sir. And those who have missed the result, it will also be uploaded on the PGSC website. You can check it in a short time. So moving further, now I request Dr. Grover to propose the vote of thanks. Thank you, Ritesh. And well, I deem it an honor to propose a vote of thanks at the occasion.
And we are grateful to our chief guest who had to leave in between for another meeting, Professor Ashok Kumar Gangli from IIT Delhi, for sparing his valuable time from his very busy schedule to be with us and deliver a talk on science, technology, and innovation impacting our daily life. And he touched various aspects of our daily life, right from food, housing, communication, and energy, climate change, where science and technology is helping us to meet the challenges related with the sustainable development. And I would also like to express my gratitude to Dr. Neelima Jairath, the Director General PGSC, for her moral support, guidance, in conduct of this event, as well as sharing innovations by young innovators at the occasion. I would also like to place on record our appreciation for our participants on this occasion, especially who joined us on this platform, their patient listening and interacting with our esteemed speaker. I also extend our heartiest congratulations to our winners of this event, Make Best Out of the Waste. And last but not the least, I take this opportunity to extend my sincere thanks to my colleagues, especially Mr. Ritesh and Mr. Vishal, for their support to organize this webinar and make it a success. In the end, I thank you all. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, everybody. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am.